welcome back to my channel. I'm back with another favorite video of mine, which is coloring my hair into something which I wanted to, because ये हो गए हैं बहुत ज़्यादा dead. Also make sure you subscribe to my channel because I come up with videos जो कि बहुत helpful होते हैं. I'm sure आप research कर रहे होगे, जो कि मैंने भी की है without doing a hair color. So this is going to be helpful for you. So चलिए आगे बढ़ते हैं. The first thing which you're going to do is subscribe to my channel. The second thing which you're going to do is change. You have to change and get a t-shirt जो कि बर्बाद होने के लिए रेडी है. So 1 2 3. So मैंने एक बहुत ही पुरानी टी शर्ट पहन ली है because I am sure कि ये खराब होने वाली है. Because we are just simply gonna deposit the color. So let me show you which product I'm going to use. We are actually gonna use the Colestone Bella. It's in shade 0/65. I am not sure if you can see it. So this is the shade I'm using, and this is actually Violet Mohogany. This is the shade which I have opted for. Let's see मेरे बालों पे वो कैसा turn out होता है. And the things which you're gonna need is gloves, of course. Bowl एक डालने के लिए I have the professional one and the traditional brush. So let me tell you, if you have black hair, आपको पहले प्री लाइटनिंग करना पड़ेगा. इसका exactly ऐसा जो इसका शेड दिया है वैसा ही शेड आपका तब आएगा जब आपके प्री लाइटेंड हेयर होंगे. मेरे ऑलरेडी प्री लाइटेंड है और ऑलरेडी लकीली स्ट्रीकिंग भी की हुई है, तो मेरे बीच बीच में से ज़्यादा मॉगनी वॉयलेट आएंगे, बीच बीच में से लाइक वेरिएशंस मुझे मिलेंगे. बट यू कैन सी थोड़े डैमेज भी है. सो आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट लाइक विद दिस पार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑल आई एम गोना यूज इज द सेम ब्रांड्स वेलाज 20 वॉल्यूम डेवलपर अलॉन्ग विद दिस. सो लेट्स मिक्स दिस एंड गेट स्टार्टेड. थोड़ा सो ऑल्सो मेक श्योर मैंने अपने बाल ऑलरेडी आज ही वॉश किए हैं, या तो आज या तो आप एक दिन पहले वॉश करो, बट उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी क्लीन सो दैट आपके कलर जो प्रोडक्ट है वो आपके हेयर पे वर्क कर पाए. सो लेट्स मिक्स द प्रोडक्ट. And by the way, this is how the package looks like, and I think I'm gonna almost use the full tube क्योंकि मैं पूरा का पूरा deposit कर रही हूँ. So are you excited to see? Because I am. Guys, taking out the full product out of this tube is next level energetic work. बहुत दम लगा के निकालना पड़ता है, and literally I had to squeeze down the full product out of the full tube. And I was dead जब तक मैंने निकाला. Apart from the jokes, you have to use 1:1 ratio of the developer and the colorant for this. And you have to mix it really well. अगर आपको लगे आपका कम डला है थोड़ा, तो मैंने थोड़ा और ऐड किया, and this is how smooth it should be. So guys, for some security on my forehead, because I have bangs, I'm using petroleum jelly so that my skin is not with the color, because I literally have a party to attend in the evening, so I want to look fine with my face. But ऐसे भी आपको लगा लेना चाहिए the petroleum jelly. And you can see that the color is coming up after mixing it. So we are directly going to start the full application. अगर आपको इतना करना होगा तो आप इतना करना, आपको जितना भी करना होगा, you just have to apply it there on the blonde. We are just going to apply it because I have it in a good quantity. आपको make sure करना है you blend it all over so that बीच बीच में वो छूटा नहीं हुआ है blondes, and it actually comes all over. And फटाफट लगाना है because I'm gonna keep it for only 20 minutes, 20 to 25. Usual check भी करना है. See, it's so pink. Oh my god.
guys, this is how messy I look right now, but that quantity was just sufficient for me. Like I had extra enough to coat it अच्छे से अंदर तक, because I have blonde fully. तो अगर वो अंदर तक नहीं पहुंचा like on every bit, तो वो बीच में blonde दिखता. So I had to cover everything. So I've covered it. Now we are gonna wait for 20 minutes. I'm damn excited to see and show you guys the results. So guys, this is how my color turned out to be. आप देख सकते हो मैंने black top के साथ पहना है, and this is how it turned out. And actually I'll show you ये धूप में भी कैसा लग रहा है, because it looks very different धूप में. So this is how my hair looks in the ring light. And मैं अभी रात की पार्टी में जा रही हूँ, so literally I was ready, so I showed you. But धूप में ये बहुत अच्छे से शाइन करके इसका कलर जो है वो दिखता है. So I'll show you that as well. I hope this video was helpful enough for you guys. Thanks for watching till now. So make sure you subscribe to my channel और बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस के लिए. Whatever I experiment on me, on my hair, because I'm a big hair color junkie, वो मैं अपनी सारी जर्नी शेयर करती हूँ. I have learned a lot. I have experimented a lot. So thanks for watching. Make sure to subscribe to my channel and see you in the next video. Bye.